हाय, शहद सी मधुर आवाज, आंखों में आंखें डालकर जब वो बोलती ना, तो ऐसा लगता जैसे कानों में संगीत सा बह रहा हो। एक ठहराव था उसमें। यार, क्या कमाल की पब्लिक स्पीकर थी वो। काश मैं भी ऐसे बोल पाता। देखो, दिमाग में तो तुम्हारे भी आता होगा ना कि काश मैं ऐसा बोलूं कि लोग सुनते रह जाएं, पर स्टेज का नाम सुनते ही सांसें तेज हो जाती हैं और एंजाइटी होने लगती है और दिमाग से शब्द गायब हो जाते हैं। होता है। तो पता है, इस वीडियो को देखने के बाद वर्ड्स गायब नहीं होंगे, पर आपकी प्रॉब्लम्स जरूर गायब हो जाएंगी, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे पब्लिक स्पीकिंग ट्रिक्स की जिनसे आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स ऐसे इंप्रूव हो जाएंगी। लेट्स हैव अ लुक। I'll say this straight. You make others sleep. You know why? Because you sound boring. That's a huge concern to tackle, isn't it? यकीन नहीं हुआ ना? Watch this. And say, hi. Hi, This is Shweta. this is Shweta. Hi everyone. Hi everyone. Hi everyone. Hi everyone. Sounds better? Versus hi everyone. Hi everyone. Hi everyone. See the pitch? Pitch plays an important role. Majority of us sound boring, monotonous. I've seen some professors who are super amazing with their skill set, a lot of research papers, but when they speak, you're like, happens? Why? क्योंकि जो voice है, it's an amazing instrument. It's an amazing instrument. Our voice is an instrument. Yes. Hope this gives you clarity. चलिए एक एग्जाम्पल देता हूं। सोचिए, आपके पास एक किताब है जिसके एक पेज पर करीब 250 वर्ड लिखे हुए हैं। अगर आप उस पेज की बार बार एक्टिव रीडिंग करते हैं, तब भी 5 से 6 बार पढ़ने के बाद आप शायद कुछ लाइंस याद कर पाएं, पर आप उसको वर्ड टू वर्ड फिर भी नहीं बोल पाएंगे, है कि नहीं? लेकिन दूसरी तरफ अगर आप एक गाना 5 से 6 बार सुनते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं याद हो जाता है। ऐसा क्यों? सोचिए, ऐसा क्यों होता होगा? सोचिए ऐसा क्यों होता होगा? बिकॉज ऑफ वन कॉमन रीजन। ये इसलिए होता है क्योंकि उस गाने में एक मेलोडी होती है, एक रिदम होती है, एक पिच होती है, और जब आपकी आवाज में मेलोडी होती है तो दो चीजें आती हैं। फर्स्ट, पीपल लव टू लिसन टू यू, एंड सेकंड, दे विल रिमेंबर योर वर्ड्स बिकॉज इट इज एन एक्सप्रेशन, इट हैज दैट एक्सप्रेशन। सो ऑलवेज एसोसिएट एक्सप्रेशंस विद योर वर्ड्स। लोग याद रखेंगे, एल्स उस वर्ड की जो वक़्त है वो रहेगी नहीं कुछ। जो दूसरी गलती है वो आपको बहुत रिलेटिव लगेगी, पर नोटिस शायद नहीं की होगी, और वो है ये। When you see some folks on the stage when they are presenting, their body swings like this. Or, hello friends, my name is Divas, and today, as you can see on the slide, we talk about how to give a great speech. Have you seen that happen? It's a pendulum motion, right, left, back and forth, back and forth. I recently saw a clip where actor Siddharth Malhotra made the same mistake. Your body language shouldn't be like this. It's equally balanced on both your hips. It will reveal a lot about your confidence. If you want to see how your body language looks when you're on stage, try recording video and see the output. Analyze करिए, आप कैसे खड़े होते हैं, आप कैसे हाथ को यूज करते हैं। Everything can be noticed. कुछ लोग ऐसे खड़े होते हैं, कुछ लोग ऐसे हिलते रहते हैं, काफी नेचुरल है। But when you practice for a speech, make sure to practice your body position as well. It should be like
this. Shoulders pulled backwards. Shoulders pulled backwards. Chin up and straight, not like this. It's back and straight. Do you get that? Now the next concern, and this is a major concern. Yes, पता है कॉलेज के टाइम पर जब मुझे कोई प्रेजेंटेशन देनी होती थी तो मुझे रात को नींद आती ही नहीं थी। यही बात दिमाग में चलती रहती थी कि स्टेज पर जाकर अगर सब भूल गया तो क्या होगा। होता है ऐसा आपके साथ कि यू हैव अ प्रेजेंटेशन टुमारो, यू हैव अ मीटिंग टुमारो एंड यू आर थिंकिंग कि यार अगर भूल गया तो क्या होगा। पर फिर ना मैंने सिचुएशन से डील करने का एक हैक निकाला। चेक इट आउट। In case you forget what you have to say next, do not showcase to the world. इनको कुछ नहीं पता। Exactly, audience knows nothing. They just think शायद this is a part of the plan. She might take a pause, look at everyone and smile and say, "Are you excited?" And let them say whatever they want to say. And then क्या करना चाहिए? Rocks. जब हम घर पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब अगर हम भूल जाते हैं तो पेपर रेफर कर लेते हैं ना। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगली बार से अवॉइड करना और उसकी जगह ये सोचो कि अगर आप स्टेज पर भूल गए तो क्या करोगे। एंड व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड लाइक दिस there will be less chances of messing up. Now, coming to the next point and the most important one. Have a look. It was, actually, basically we have this plan, Uday? The question is, why do we use filler words in the first place? इंग्लिश की क्लास में तो कभी हमें और आ नहीं पढ़ाया गया आपको नहीं पढ़ाया ना। तो जब हम स्टेज पर होते हैं तब हमें लगता है कि हमें हर मोमेंट पे एक वर्ड फिट करना ही है। सन्नाटा नहीं आना चाहिए, साइलेंस नहीं आना चाहिए, गैप नहीं आना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप कॉन्फिडेंटली बात करें और फिलर वर्ड्स को अवॉइड करने के लिए पॉज लें। Have a look. Today, I am here to share something with you. I don't know what I have to say. Basically, actually, I am trying to say, but you get that? But today, I have something to share with you. Something really important. I have no clue what I have to say next, but I'm sounding as if I know everything. That's how it works. That's how it works. And now we are going to talk about a very important aspect of public speaking. It can be your biggest strength or your biggest enemy. While watching me, did you notice something? Is something missing? If not, go 20 seconds before and let me know in the comment section. So the answer is missing hand movements. I didn't move my hands, and most of the people do not know what to do with their hands during a presentation. We all know how right hand gestures at the right time can amplify your message, and they're called as functional gestures. Research has shown that over 50% of communication is non-verbal, with body language and hand gestures playing a crucial role in conveying meaning and emotion. So if you want to build a connection with your audience, be open with your body language. Even in my talk, I use a lot of gestures to communicate my message. Welcome everyone. It's a pleasure to have you over here. Versus, welcome everyone. It's a pleasure to have you over here. You see this? Your hand movements. When I'm like this, I'm welcoming you. And now, dun, 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 this is the bonus tip, and as we call it, the double dose by Divas. आपको सच बताऊं, जब भी आप स्टेज पर खड़े होंगे तब आपको डर लगेगा, पर सवाल ये है कि उस डर से बाहर कैसे निकला जाए। Here is your answer. आप खड़े होंगे, आपके दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है you can focus on मेरा हार्ट बीट बहुत तेज चल रही है और पसीना भी आ रहा है और सांस भी फूल रहा है
और कुछ पेट में घुसा हुआ है. That's one area of focus. Another is focusing on the value that I'll be adding in the next 5 minutes. Politicians know they have to influence the people's choice. A TED speaker knows he has to share his idea or story. Whenever you step on the stage, the agenda should be clear in your mind. Most of the time we focus on people's reaction. अगर रूम में एक भी इंसान बाहर चला जाता है तो हमें लगता है कि ये मेरी स्पीच की वजह से बाहर चला गया, मैंने इसको बहुत पकाया, मतलब इसको अच्छा लगा ही नहीं, एंड उसी समय हम अपना सारा कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं. पर वो आपके परफॉर्मेंस का टाइम है और आपको सिर्फ उसी पर फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कौन कहां गया. Hope you got the point. That's all for today's video. If you like this content, I don't know what is stopping you from sharing this with those who need it. Go ahead, subscribe to this channel and share some awesomeness. Till then, stay awesome, stay productive.